Jaya Radha Kunja Bihari. Listen to the timing. Time is a little different. Just listen to the timing. Time is a little different. It's 2/4, not 4/4. Jaya Rama, Kunja Bihari. Jaya Radha Kunja Bihari. Gopi Jana Mandana Girivardhari. Gopi Jana Mandana Girivardhari. Yashoda Nandana Ajajana Ranjana. Yashoda Nandana Ajajana Ranjana. Yamuna Tira Balasari. Yamuna Tira Balasari. Jaya Radha Kunja Bihari. Jaya Radha Kunja Bihari. Gopi Jana Mandana Girivardhari. Jamuna Tira Balasari. Jamuna Tira Balasari. Jaya Radha Kunja Bihari. Jaya Radha Kunja Bihari. Gopi Jana Mandana Girivardhari. Gopi Jana Mandana Girivardhari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Gora Hari Baba, Gora Hari Baba, Gora Hari Baba. Gora Hari Baba, Gora Hari Baba, Gora Hari Baba, Gora Hari Baba. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivakachas Gurutada Satya Shri Srimad Divine Grace Nitya Leela Provision Om Shripad Paramahamsa Parivakachas Gurutada Satya Shri Srimad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Sri Haridasa Thakur Ki Jai Prem Se Koshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasudeva Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Sham Kundi Radha Kundi Gilu Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dham Ki Jai Mamati Dham Ki Jai Lagnapuri Dham Ki Jai Shri Ram Sri Ram Ki Jai Ganga Mai Ki Sri Moni Mai Ki Bhakti Devi Tulsi Maharani Srimad Bhagavatam Ki Jai Gaur Premananda Hare Krishna Srimad Bhagavatam Ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam.
But first, I haven't formally thanked the devotees for me coming back. You know, I have history with Mira Road Temple. हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरा इस्कॉन में जरूर मंदिर से इतिहास है। At the time, it was in 2001 when I came here. This wasn't built. जब 2001 में मैं इधर आया था, ये मंदिर तब नहीं बना हुआ था। The school wasn't there, and nor was the hospital. The school and the hospital wasn't there. जो स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो भी नहीं था। So it's a lot of history. And Prabhupada always showed me, stay the course in my devotional service. तो इस प्रकार मैं यहाँ पर उसमें आया। प्रभुपाद जी ने हमेशा हमें सिखाया है कि हमें भक्ति में बने रहना चाहिए। The Lordship Sri Sri Radha were also very kind to me. श्री राधा गिरिधारी भगवान जी भी मेरे प्रति बड़े दयालु रहे हैं। I'm gonna tell you a short story, true story, happened here. मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। Well, as you know, I'm a musician. जैसा आप लोग जानते हो, मैं एक संगीतकार हूँ। And so at that time, in 2001, I had a CD that was promoted all over the world. 2001 में एक सीडी थी जो मैं पूरे विश्व में प्रसारित कर रहा था, बांट रहा था। Called Do Things Right. If you Google Shambhu and the Punya crew, Shambhu and the Punya, Punya, Punya crew, then it'll come up. तो अगर आप गूगल पे जाएंगे और शंभू और पुण्य गुरु ये दो शब्द को टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, वो सीडी के बारे में पता चलेगा। So on that CD, I had one song that was glorifying Lord Chaitanya. It was a tribute to Lord Chaitanya. तो सीडी में एक गीत चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहा था या करने वाला था। So the president of the temple at that time, he played one song, Hari Hari Bol. तो इस मंदिर का उस समय जो प्रेसिडेंट था, उसने वो गीत बजाया था, हरि हरि बोल। So what happened was there was someone in the congregation who heard the song. तो कांग्रेगेशन में किसी ने उस गीत को सुना। So the devotee came to me and asked, because at that time I was married. उस समय एक भक्त मेरे पास आया, मैं उस समय विवाहित था, विवाहित जीवन में था, तो मुझसे पूछा। So just like now, I gave the Bhagavatam class, and then Prabhuji played the song. And then after the song was played, this gentleman came to me and asked, because we was going back to her parents' house, because the parents lived 5 minutes away from the temple. तो उस समय मैंने क्लास की, जब वो गीत बजाया गया, तो वो सज्जन व्यक्ति मेरे पास में आया और मुझसे कुछ पूछने लगा। वो उसके माता पिता यहाँ से 5 मिनट दूरी में हैं। So the gentleman got up and approached me and asked me, could I wait 5 minutes before we leave to go back to the house? तो उसने कहा कि आप 5 मिनट यहाँ पर प्रतीक्षा करेंगे। So I said, yeah. मैंने कहा हाँ। So when he comes to the temple with 2 guitars in his hand. He has 2 guitars. Wait a minute. One's acoustic and one is electric. He had 2 guitars, one acoustic, one electric. तो वो अपने घर गया, 5 मिनट दूर से घर था, तो वो घर से आया, 2 गिटार लेकर आया और एक गिटार बिजली से चलने वाला था, दूसरा जो नॉर्मल होता है लकड़ी का बना हुआ वैसा वाला। So after hearing the Hari Bol song, he said that it doesn't have no one worthy of these instruments than me. So he wanted to gift me the instruments. तो फिर जब उसने वो मेरा गीत सुना, तो उसने कहा कि मेरे घर में ये बजाने वाला कोई नहीं है और ये इंस्ट्रूमेंट आप ले चलिए।
But my mindset when it comes to instruments, they're like revered, like the Arjuna, not Arjuna with the Gandiva bow. I revere the instruments. यस तो प्रभु जी बोल रहे हैं लेकिन उनका मनोभाव ऐसा होता है जैसे कि अर्जुन अपने धनुष का बहुत सम्मान करते थे उसको पूजते थे तो मेरे लिए जो वाद्य यंत्र होते हैं वो मैं उनको पूजनीय मानता हूँ So I was trying to convince him to keep his guitars. He shouldn't just give away instruments like that. It's तो very. मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये आपका है आपके पास ही रखो ऐसे किसी को भी नहीं देना चाहिए So he was very insistent. He was very insistent. लेकिन वो जिद कर रहा था So I took the acoustic. I said, okay, I'll take this one. You keep this one. The मैंने electric. जो सामान्य होता है वो रख लिया और जो बिजली से चलने वाला है उसको दे दिया Okay. So now we're going back to our parents' house, which is like 5 minutes from the temple. उसने कहा ठीक है मैं 5 मिनट दूर मेरा घर में जा And so at that time, we checked emails. And so I checked my email, and my brother back in US, he said, call home ASAP. Had to call me immediately. तो जब मैं अपने घर पे पहुंचा फिर मैंने अपनी ईमेल चेक किया तो वहाँ पे एक मैसेज आया हुआ था संदेश कि घर पे तुरंत कॉल करो So I knew something was serious. तो मैं समझ गया कि कुछ गंभीर है So when I called him, he told me my flat was robbed. तो मुझे कॉल पे ये बताया गया कि जो मेरा घर था उसमें चोरी हो गई And the first thing I asked was, did they bother the altar? तो मैंने सबसे पहले ये पूछा कि उन्होंने क्या जो भगवान का ऑल्टर होता है उसको खराब किया They didn't bother the altar. तो नहीं ऑल्टर को तो छुआ भी नहीं So my second question was, did they take any of my guitars? तो फिर मेरा दूसरा प्रश्न था क्या वो मेरी गिटार लेकर चले गए He said, yeah. They took acoustic and they took electric. तो उन्होंने कहा हाँ आपके दोनों गिटार चोरी हो गए एक सामान्य वाला भी और दूसरे इलेक्ट्रिक वाला So I wasn't angry because you see what just happened. Krishna was giving, Prabhupada was telling me, the guy had the electric and the acoustic, just like that. So these type of situations in my life doing Prabhupada always happen. He give me more than enough evidence to stay the course. He's so kind to me. He's always showed me clearly. Of course, I haven't followed all the time, but it's so clear. How can you not see the correlation between the two? तो वह कितनी विचित्र घटना है वहाँ पर मेरे घर में चोरी होती है मेरे दोनों गिटार चले जाते हैं और यहाँ पर एक कोई अनजान व्यक्ति आकर मुझे वही दो प्रकार के गिटार देता है एक सामान्य और इलेक्ट्रिक और बोलता है आप इसको ले जाओ तो बोले कि ऐसे ही मेरे जीवन में प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मेरी जो श्रद्धा है बनी रही हालांकि मैं अपने जीवन में बहुत बार उतार चढ़ाव का अनुभव किया हूँ लेकिन मैं इस प्रकार इस मार्ग में बना रहा और वो प्रभुपाद जी की कृपा है That's part one. So we was going back to America within a week. तो ये उस कहानी का भाग एक है फिर हम अमेरिका वापस जा रहे थे उसी सप्ताह में जा रहे थे Have you ever heard of Sherlock Holmes? Ask me if you heard of Sherlock Holmes. आपने शर्लॉक होम्स का नाम सुना है Yes, they know. I see. सुना है They know. So I became Sherlock Holmes. And I got all my receipts, my bills, my pictures. And I went on a campaign to try to find out if my guitars were at certain places. तो मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी तो मैं जैसे इसको बताया जाता है ना कि आप अपनी चीज़ को कोई ढूंढता है जासूसी करता है तो मैं वैसे ही अपने गिटार को खोजने की कोशिश कर रहा था See, in America, they have what's called pawn shops. Pawn shops. Pawn shop. P-A-W-N. तो अमेरिका में कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जिसको
pawn shops बोलते हैं. So what is a pawn shop? A pawn shop is when you go to it, you take something of value. Say like you want to take my guitar to the pawn shop, and Sell it. no sale. You get a loan. They give you some money for it, but they'll keep it until you return it. And then when you return it, you pay them back, and they give you your guitar back. It's a loan place. तो pawn shop एक ऐसा दुकान होता है जहाँ पर आप अपनी कोई वस्तु छोड़ सकते हो और बदले में वो आपको कुछ पैसे देंगे उधार. फिर जब वो आप पैसे वापस कर दोगे तो वो वस्तु आपकी वापस कर देंगे. So there are hundreds of them all over the metropolitan area in every city. They all have them. They're everywhere. Hundreds of them. तो ऐसे अमेरिका में बहुत सारी दुकानें होती हैं. The second one that I went to, the second one, I showed the pictures, I showed them my receipts, and I explained everything to the individual. Because see, the law is when somebody pawns something, they cannot sell it until after 30 days because they want to make sure that it's not stolen. So the law is if somebody pawns something, the shop cannot sell it until after 30 days. तो उन दुकानों में नियम होता है कि जो सामान उनको मिलता है वो उसको 30 दिन तक बेच नहीं सकते क्योंकि वो सामान का मालिक आकर दोबारा वो सामान मांग सकता है. तो मैं जो दूसरी दुकान में ही गया मेरे पास वो गिटार की पिक्चर थी. So again, the second one I went to, and I gave him all, I showed the pictures, I told him the bills, everything. He looked at the guitars, he said, I have these two right here. तो जब मैं अपना सारी पिक्चर्स लेकर गया फोटोग्राफ्स और बिल लेकर गया ये गिटार तो दुकानदार बोला कि हाँ मेरे पास आपकी ये दोनों गिटार हैं. Super soul. The Lord's Prabhupada's blessing to me. That's like a needle in a haystack, finding it, because there's so many of them. तो बड़े देखो ये भी परमात्मा ने मुझे अंदर से प्रेरित किया कि मैं दूसरी दुकान में ही मुझे वो गिटार मिल गए. तो ऐसे तो जैसे कि कोई घास फूस का बहुत बड़ा पहाड़ जैसा हो उसमें सुई ढूंढने के समान मुश्किल से मिलेगा. तो इतनी सारी हजारों दुकानें होती और मैं दूसरी दुकान में गया और उसमें मुझे अपने गिटार मिला. That's a testament. I'm telling you that these stories have came into my life all my life. तो इस प्रकार की घटनाएं मेरे जीवन में होती रहती हैं. Prabhupada always took care of me. He's always took care of me. And because of his kindness, the Shraddha, faith in his mission and his activities always gives me strength. तो इस प्रकार की घटनाएं मेरे जीवन में होती रही और प्रभुपाद जी इस प्रकार हमेशा मेरी रक्षा करते रहे मेरा ख्याल रखते रहे और इससे मेरी जो श्रद्धा है भक्ति के कार्य मेरे प्रभुपाद जी के आंदोलन में वो बढ़ते गए. Just like this book, anyone who's taken birth as a human being, body moving, it's the same thing. It's just like the incident I just explained. It's the same thing. I did not plan this. This was not planned. It's all inspired by Prabhupada. And because I was able to recognize it, then I did it. तो जैसे कि ये पुस्तक है कि किसी भी मनुष्य का जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है तो ये ग्रंथ भी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मैं करूँगा लेकिन प्रभुपाद जी के पास ऐसा हो गया. मैंने इस पुस्तक को लिख दी. See, the Lord is Paramatma in the heart. जो हृदय में बैठे परमात्मा हैं. And Krishna is actually what's called Chaita Guru. He's the first guru in the heart. जो कृष्ण हमारे हृदय में है वो गुरु के रूप में कार्य करते हैं. पहले गुरु उनको चैत्य गुरु कहते हैं. And at all times, they will test you to see how much तो वो हमेशा faith you have. आपकी परीक्षा लेते रहेंगे कि आप में कितनी श्रद्धा है. I'm going to tell you a story. It's Nityalila Pravishna Om Vishupad Paramahamsa Parivakachara Stodatara Sati Shri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. तो मैं आपको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन से एक घटना सुनाऊंगा. This story is
test how much shraddha you have in the process, in the words of the guru. ये कहानी में पता चलता है कि कैसे एक व्यक्ति की अपने गुरु के शब्दों में कितनी श्रद्धा होती है, उसकी परीक्षा कैसे ली जाती है। So there was a festival that was going on for a whole week. एक उत्सव था जो पूरे सप्ताह तक चल रहा था And prasadam that was being distributed was lower to the ground. The prasadam was lower to the ground. प्रसाद all over the ground No, I didn't say that. It was, you know, they had the put it on the tables, but it was closer to the ground than up. So it was closer to the ground. तो जो प्रसाद था वो बहुत जमीन जमीन के बहुत ऊपर नहीं रखा हुआ था नीचे की तरफ रखा हुआ था So a dog had came by and ate some prasad. तो एक कुत्ता आया उसने कुछ प्रसाद खा लिया So a devotee said, "Oh Prabhu, don't eat that. The dog touched me." तो एक भक्त ने दूसरे भक्त को कहा कि अब तुम उसको मत खाना कि कुत्ते ने मुंह लगा दिया So Srila Bhaktisiddhanta, from a distance, he heard that. तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने दूरी से इस बात को Jai Mercy. Jai. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he asked the devotees, where did the dog, which place did the dog take the prasad? तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भक्तों से पूछा वो कौन सी प्लेट थी जिसमें से कुत्ते ने खा ली So they pointed to him. He went to the same spot, took some prasadam, laid it. तो भक्तों ने दिखाया कि किस प्लेट से तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उस प्लेट के पास गए उस प्लेट से जहाँ पर कुत्ते ने मुंह लगाया था वहीं से उठाकर प्रसाद अपने मुंह में डाला So what's the lesson? तो इसमें शिक्षा क्या है It's the shraddha. If you don't have faith in the process, then it's not going to. If you don't have faith that it's prasadam, it's not prasadam. तो यहाँ पे शिक्षा है श्रद्धा की Krishna is the supreme. He's a person, but he's the supreme person. अगर आपकी श्रद्धा नहीं है कि ये प्रसाद नहीं है तो वो प्रसाद नहीं है So he knows everybody's how they deal and their mindset and how much faith we have in everything that we do when it comes to the process. चूंकि कृष्ण है भगवान है एक व्यक्ति है वो जानते हैं कि हमारी कितनी श्रद्धा है So Bhaktisiddhanta said that because you don't have faith that this prasadam, it's not prasadam. तो इससे भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहे कि अगर आपकी श्रद्धा नहीं है कि ये प्रसाद नहीं है तो प्रसाद नहीं है Even when we offer to the Lord, that doesn't mean the Lord accepts it every time. It's not automatic. This is a science. This is a science process that the Acharya has given us. It's not automatic that the bhoga that's being offered is the Lord is accepted. It's not all the time. Not all the time. We just hope that is the case, but the Lord's tested all the time. He's tested because Maya is a pure devotee of the Lord. She's also a pure devotee, so she's going to see if you want my Lord. Okay, let me see. She's going to test you at all times. जब भी हम भोग लगाते हैं तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भगवान ने उसको स्वीकार किया है कि भगवान देख रहे हैं कि आपने श्रद्धा से भोग लगाया कि नहीं लगाया और माया देवी भगवान की शुद्ध भक्त है तो वो भी तो परीक्षा लेगी कि आप सही तरीके से भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे This process is the highest on the. ये जो मार्ग है विधि ये सबसे ऊंचा है There's no place on this planet that gives so much information how one can develop their love for the Lord. इस पूरी धरती पर कोई ऐसा स्थान नहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर आपको इतना ज्ञान मिल सके कि आप कैसे भगवान की सेवा कर सकते हो उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हो कैसे भक्ति कर सकते हो That's why Prabhupada inspired me to do this, because I didn't plan this. इस
इसलिए प्रभुपाद जी ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इस पुस्तक को लिखूं। मैंने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई। See, 1975, when I first came to India. तो 1975 में जब मैं पहली बार भारत आया, And so His divine grace was so kind that He liked me to preach in here. तो प्रभुपाद जी बड़े कृपालु थे मेरे ऊपर। उन्होंने मुझे यहाँ पर प्रचार करने के लिए कहा And I promised Him that I would come back, और उन्होंने ये भी कहा मैं दोबारा भारत आऊँगा, but I didn't know when. लेकिन मुझे पता नहीं था कब। But He arranged everything, ये उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी and that's the truth. और ये सच्ची बात है। So, as I was gathering the information for the book, see, people here have no idea. They have no idea how fortunate they are. तो मैं जब इस पुस्तक के लिए सूचना इत्यादि एकत्रित कर रहा था, तो देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं ना, उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कितने भाग्यशाली हैं। You cannot take birth as a human being in Bharat Bhumi without putting the work in. तो आप भारत भूमि में जन्म ही नहीं ले सकते अगर कोई पुण्य न हो। Although it's also understood that planet Earth is considered Bharat Bhumi. और ऐसा हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी को ही भारत भूमि कहा जाता है। In fact, it was Srila Bhaktivinoda Thakur. He said of all the planets in this universe, planet Earth is the best. भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है कि जितने भी लोग हैं, ग्रह हैं, उसमें भारत भूमि की पृथ्वी सबसे विशेष है। And of all the places on this planet, Bharat Bhumi is the और best. इस पृथ्वी पर, इस भूलोक पर ये भारत भूमि सबसे विशेष है। And all the places in Bharat Bhumi, it says that Bengal. और भारत भूमि में बंगाल सबसे विशेष है। Can anybody tell me why? Why? Why is Bengal? Yeah, that's right. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Why is that? Because Lord Chaitanya, He's given freely love of God. बंगाल क्यों सबसे उच्च स्थान है? क्योंकि वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ और चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति को सबको दिया, मुफ्त में दिया। Krishna says, "You surrender to me." कृष्ण ने कहा कि आप शरणागत हो, But Lord Chaitanya says, "Just surrender to Krishna." चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाओ। So anyway, I haven't even got to the verse yet. अब मुझे श्लोक को पढ़ना है, श्लोक को पूरा करना है। Ya no, Yayo, Sura, Striya, Shatar, Yayo, Sutra, Striya, Satar, Avaruha, no, Avaruya, Sva, Disyataha, Yayo, Striya, Striya, Satar, Avaruya, Sva, Disyataha, Vridanti, Pumsa, Sinchanta, Sinchantyo, Virag, no, Vigaya, Rati, Karashitaha, Kridanti, Pumsa, Sanjantyo, Vigaya, Rati, Karisita, Yayo, Swaru, Yayo, Sura, Striya, Shataya, Avaruya, Svad, Inisyataha, Kridanti, Pumsa, Chitan, Yo, Vigaya, Rati,
Karsitaha. Chata. Avaroya Svadishyatha. Kridante Posa Sanchantyo. Vigyarati Karsita. Chata. Avaroya Svadinam Yatha. Vedante Pumsan Satyantyo. Vigaya Rati Krishita. Gaya Siddha Yatha. Avaroya Swadhisyanata. Vedante Pumsa Satyantyo. Vigaya Rati Krishita. Gaya Sura Sriya Chata. Avaroya Swadhisnyata. Vedante Pumsa Jantyo. Vigaya Rati Krishita. Gaya Sura Chata. Avaroya Swadhisnyata. Vedante Pumsa Jantyo. Vivaya Atika Sita. Svadhishyata. Vedante Pumsa Jantyo. That's it? Yayo, in both of which? River. Surya Striya, the celestial damsels along with their husbands. Okay, good. Yeah. Okay, good. शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण की भक्ति अभिचला विज्ञान साम श्रुति और प्राण के द्वारा श्रुत और प्राण ये हो जिन दोनों नदियों में सूरज स्वर्ग की सुंदरियां अपने पतियों समेत सदा हे विदुर Avayoya. उतर कर स्वर्ग नयतः अपने अपने विमानों से लीला करते हैं ओम सह उनके पति जिसे जल छिड़क कर विगाहय जल में प्रवेश करके गतिका शिताः जिनका रति सुख घट चुका है अनुवाद हे शटर हे विदुर स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों समेत विमानों से इन नदियों में उतरती हैं और काम क्रीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती हैं तथा अपने पतियों के ऊपर पानी खींच कर आनंद उठाती हैं। ऐसा क्या होता है कि स्वर्गलोक की महिलाएं अपने विषय सुख के विचार से दूषित रहती हैं फलतः वे विमान में चढ़कर नंदा नदी में स्नान करने आती हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि दोनों नदियों का जल भगवान के चरण कमलों की दर से बाहर
दूसरे शब्दों में जिस प्रकार भगवान नारायण के चरण के अंगूठे से निकलने के कारण गंगा पवित्र है, उसी प्रकार से चाहे जल हो या कोई अन्य वस्तु, जब भगवान की भक्ति के संपर्क में आती है तो वह पवित्र और दिव्य हो जाती है। भक्ति के विधि विधान इस सिद्धांत पर टिके हैं कि जो वस्तु भगवान के चरण कमलों के संपर्क में आती है तो भौतिक कल्मश से तुरंत मुक्त हो जाती है। स्वर्गलोक की सुंदरियां विषय जगत के दूषित विचार लेकर पवित्र नदियों में स्नान के लिए आती हैं और अपने पति पर पानी उछाल उछाल कर आरती करती हैं। इस संबंध में दो शब्द महत्वपूर्ण है। रति प्रशिता अर्थ है कि रति सुख के पश्चात सुंदरियां प्रदान हो जाती हैं। यद्यपि वे शारीरिक आवश्यकता में काम सुख को स्वीकार करती हैं, किंतु बाद में प्रसन्न नहीं होगी। अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान गोविंद को 3 बार कहा गया है। तीर्थ का अर्थ है पवित्र स्थान, बार का अर्थ है भगवान के चरण कमल। लोग पवित्र स्थानों में अपने पाप बंधनों से छूटने के लिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अवरुद्ध हैं, वे स्वतः पवित्र हो जाते हैं। भगवान के चरण कमलों को तीर्थ बार कहा जाता है क्योंकि उनके संरक्षण के सैकड़ों हजारों साधु पुरुष तीर्थ स्थान को पवित्र कर देते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम दास संत का उपदेश है कि हमें विभिन्न तीर्थ स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है। निस्संदेह एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा कष्टदायक है, किंतु जो बुद्धिमान होता है वह गोविंद के चरण कमलों के शरण में जा सकता है, जिससे वह अपनी तीर्थ यात्रा के परिणाम स्वतः शुद्ध हो जाता है। जो कोई भी गोविंद के चरण कमलों की सेवा में अटल है वह तीर्थवान है। उसे तीर्थ स्थलों में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान के चरण कमलों की सेवा में लिप्त रहकर वह ऐसे आनंद से लाभ पा सकता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों में रखकर श्रद्धा रखता है, विश्व के किसी भी भाग में जहाँ रहने का निर्णय लेता है, तीर्थ स्थान बन जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि भागवत की 13:10। ऐसे स्थान जो भक्तों की उपस्थिति के कारण पवित्र हो जाते हैं। यदि भगवान ही उनका शुद्ध भक्त किसी स्थान में रहता है तो वह स्वतः तीर्थ स्थान में परिणत हो जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा शुद्ध भक्त जो 100% भगवान की सेवा में तन्मय रहता है, विश्व के किसी भी भाग में रह सकता है और स्थान शीघ्र ही पवित्र स्थल बन जाता है जहाँ वह भगवान की इच्छा अनुसार उनकी सेवा कर सकता है। जय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य जनार्दना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपकदामयं तदति स्वावदाति। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी हस्तचारी चितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So this chapter pretty much is describing the abode of Lord Shiva. जो अध्याय है ये शिव जी के निवास स्थान या उनके धाम को वर्णन करता है। Lord Shiva is in a unique position of all the demigods. Of all the demigods, Lord Shiva is pretty much separate from everyone else. सभी देवताओं में भगवान शिव का बहुत ही विशिष्ट स्थान है, वो उन सबसे अलग है। He's almost as powerful as Vishnu, but not as powerful. लगभग भगवान विष्णु जितने ही शक्तिशाली, हालांकि विष्णु भगवान विष्णु जैसे नहीं। That sounds contradictory, though. इसमें कोई विरोधाभासी बात नहीं है। But Prabhupada gives the example of milk and yogurt. Yogurt comes from milk, but it can never become milk again. प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं दूध और दही का। दही दूध से आता है, इन दोबारा से दही दूध नहीं बन सकता है। So Lord Shiva
And his abode is describing how opulent the place is, very opulent. तो शिव जी का जो धाम है बहुत ही ऐश्वर्य। It's also described that unless you are a rishi or sage, performing spiritual activities in the heavenly planets is almost impossible. जो देवलोक होते हैं, स्वर्गलोक होते हैं, उसमें अगर आप ऋषि संत नहीं हो तो आपके लिए भक्ति करना या फिर कोई योग साधना करना संभव नहीं। Because the level of enjoyment is so superior that we can't even comprehend. क्योंकि इंद्रिय तृप्ति का वहाँ पर जो स्तर है वो इतना ऊंचा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। There was y'all remember there was a movie called Close Encounters of the Third Kind? Anybody remember that film? Close Encounters of the Third Kind. It was a film that came out. Yeah, it was a movie that came out in the 80s called Close Encounter of the Third Kind. Yeah. तो एक 1980 के दशक में एक मूवी आई थी उसका। It was a huge film. It was big. उसका ये नाम था क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड, बहुत बड़ी मूवी थी। Anyway, what happened was they showed it like a star. When you looked at it, it was like a planet, a star. तो उस मूवी में दिखाया गया था कि एक तारा जैसा था जो एक ग्रह। But as it came closer and closer to the planet, it became bigger, and you could see that it was a ship. तो जैसे जैसे फिर वो ग्रह के पास आने लगा, अपने ग्रह के पास, तो पता चला कि वो तो एक वायुयान है। So what's my point? What's my point? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? My point is, the Vedas, there's what, 18 Puranas, six Puranas for Tamagum, 6 Puranas for Sattvagun, and 6 Puranas for Rajagum. And then you have the Upanishads, and then you have the Bhagavad Purana, and then you have Amar Bharat. तो जो वेद होते हैं, फिर 18 पुराण होते हैं जिसमें 6 तामसिक लोगों के लिए, 6 सात्विक के लिए, 6 राजसिक के लिए, फिर उपनिषद, फिर श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि। Outside of India, because of poor fund of knowledge, they say, oh, they worship all kinds of gods. तो भारत से बाहर के लोग जिनमें अल्प ज्ञान है, वो कहते हैं कि भारत में लोग नाना प्रकार के भगवानों को पूजते हैं। So they're looking at it like the ship that looks like a star, because they have no clue about the information that's contained in the Vedas. तो उनको इसलिए एक वायुयान दूर से एक तारे के समान दिखता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, उसी प्रकार उनको वेदों का ज्ञान नहीं है। So that's why people here are so fortunate. इसलिए तो इस भूमि पे जन्मित लोगों का कितना भाग्य है, कितने वो सौभाग्यशाली हैं। You can pick and choose where you want to go. तो आप चुन सकते हैं कि आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। Well, we're so fortunate that we're called Rupanugas, और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें रूपानुगा कहा जाता है। followers of the 6 Goswamis, Rupanuga. 6 गोस्वामियों के पश्चिम में चलने का हमें अवसर मिल रहा है, रूपानुगा कहा जाता है। And there's no group of literature that can compare with what the 6 Goswamis given to the world. तो जिस प्रकार के ग्रंथों को 6 गोस्वामी ने प्रदान किया है, दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिससे तुलना की जा सके। Even the information that was given by Srila Bhaktivinoda Thakur, the Vaishnava community revered him so much that they named him the 7th Goswami. श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर ने भी इतना ज्ञान दिया कि वैष्णव समाज को सम्मानित करने के लिए उनको 7वां गोस्वामी के नाम से घोषित किया। And what to speak of
Srila Bhakti Siddhanta and what Prabhupada's given us, because it's the same thing. तो फिर भक्ति सिद्धांत तक सरस्वती का और प्रभुपाद जी का क्या कहना There's two systems in the world. है? इस जगत में दो प्रकार की प्रणालियां होती हैं, Ascending and descending. अवरोह और आरोह। 98% of the people in the world follow the bottom up system. 99% लोग जो है वो आरोह पंथ अपना रहे हैं। What do I mean by that? इसका मतलब क्या है? Can anybody relate what I'm saying? क्या कोई बता सकते हैं क्या कहना चाहते हैं? Bottom up. नीचे से ऊपर जाना। In other words, most people are their own authorities, what they think. What it's how you interpret. Even I remember talking to a journalist from here, and his idea is that you can interpret the Bhagavad Gita your way, how you think. इसका मतलब ये है कि अधिकांश लोग अपने ही मनगढ़ंत विचारों के द्वारा हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार एक जर्नलिस्ट से मिला तो उसने कहा मैं भगवत गीता को अपने अनुसार समझा सकता हूँ। And that's pretty much 90% of the people in the world. Everybody go by what they think. तो लगभग 99% लोग ऐसे ही होते हैं, जैसा वो सोचते हैं उसी प्रकार समझने की कोशिश करते हैं। But we come from a top down, from the Evam Param Praptam Rasha Yovidu, from the Acharyas on down. लेकिन हम अवरोह पंथ को स्वीकार करते हैं, ऊपर से नीचे ज्ञान आता है इसको। That really impressed me when I was a youngster, when I was 15, how that there was an unbroken chain of acharyas, and they all said the exact same thing, and it went all the way back to Krishna. That really impressed me. जब मैं युवा अवस्था में था, लगभग 15 साल का था, ये बात से मैं बहुत प्रेरित हुआ कि ये अटूट श्रृंखला है आचार्यों की जो कृष्ण तक जाती है और वो सबके सब एक ही ज्ञान देते हैं। The Bhagavad Gita is the foundation, the spiritual foundation for any human being on this planet. If you want to actually develop some serious spiritual understanding, Bhagavad Gita, as it is the foundation, bar none. इस विश्व में इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं उनके लिए आध्यात्मिक ज्ञान का आधार है भगवत गीता या धर्म। उनको किसी प्रकार का भी आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो उनको भगवत गीता या धर्म पढ़ना चाहिए। And the Prabhupada always says that Bhagavad Gita as it is. इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे भगवत गीता यथारूप। Because he didn't interpret it. He just gave the information just as Krishna explained. क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया, जैसा कृष्ण ने दिया है उन्होंने वैसा का वैसा दिया। And no translation of the Bhagavad Gita has produced so many devotees worldwide. And that's just the truth. और कोई भी गीता का अनुवाद विश्व में इतने भक्तों को नहीं बनाया है कृष्ण भक्तों को जितना नहीं प्रभुपाद जी की भगवत गीता या धर्म ने बनाया। Always judge a thing by its results. इसलिए हमेशा परिणाम से ही हम किसी चीज का सही आंकलन कर सकते हैं कि कितना सही है कितना गलत है। So the demigods, they revere this place, Bharat Bhumi. इसलिए देवता करते हैं भारत का सम्मान करते हैं, पूजते हैं। In the next canto after this particular one, the demigods, they're saying, the demigods continue after performing the very difficult task of executing Vedic ritualistic sacrifices. इसी स्कंद के बाद में You read that and translate. 5वें स्कंद में कहा गया है कि देवतागण अपने मुखारबिन से बोल रहे हैं कि वैदिक यज्ञों को करने के बाद, वैदिक यज्ञों के कठिन कार्यों को करने के बाद, तपस्या करने के बाद, नाना प्रकार के व्रत दान करने के बाद हमने इस स्वर्गलोक के या देवलोक के निवासी होने का स्थान को प्राप्त
अत्यधिक नियुक्ति के कारण हम भगवान के चरण कमलों को भूल गए। See, they understand that it's very difficult for them to perform spiritual activities in the heavenly planets because of the level of enjoyment. तो यहाँ पर देवता लोग खुद स्वीकार करते हैं कि इतना भोग विलास होने के कारण वो मुश्किल से आध्यात्मिक कार्य में लग पाते हैं। But because of the here, it's so easy. It's set up. The Lord set it up so that although it's temporary and the lifespan is short, but it's so easy to perform spiritual activities here than any other place on the planet. Just like in America, they call it the land of opportunity. तो यहाँ पर लेकिन कितना आसान है इस भक्ति को प्राप्त करना या कार्य करना, जैसे कि अमेरिका में कहते हैं कि जमीन मिलना बड़ा आसान है। They get the H-1B visa, the LC, all these facilities that you get from U.S. But this is the land of spiritual opportunity, bar none. There's no place on the planet that can give spiritual knowledge on such a high level than Bharata Bhumi. जैसे अमेरिका देश में वो विज्ञापन करते हैं कि अगर आप इस भूमि में आ जाते हो आपको भौतिक जीवन में इतने सारे अवसर प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन भारत भूमि में जो आध्यात्मिक अवसर प्राप्त होता है वो किसी भूमि में नहीं प्राप्त होता। So take advantage of this. You're very fortunate to take advantage of it. Don't let the material facilities sway you. इसलिए आप सभी लोग इस अवसर को लाभ उठाइए और जो भौतिक प्रवृत्तियां होती हैं भौतिक जीवन की उससे आप प्रभावित ना हो। Okay, it's 9 o'clock. Anybody have any questions? तो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है? Wow, no question. Everybody agree. कोई प्रश्न नहीं, इसका मतलब सब मेरी बात से सहमत हैं। Everybody agree? सब लोग सहमत हैं। Give them the mic. You translate. तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि किस तरह से भक्ति कार्य में सेवा में लगा हुआ हूँ। तो मेरा जो 17 साल है वो भक्ति कार्य में नया के हम उसमें हमें प्रोत्साहन नहीं किया। जब हम बाहर आए मुंबई जैसे शहर में वहाँ पे 17 साल हमने बिताए तो उसमें हम भक्ति कार्य को सिखाई। जब मुंबई आए तब जाकर हमें ईश्वर के भक्त के साथ मिलना हुआ और भक्ति कार्य में सेवा में हुआ। और अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भक्तों के साथ रहकर भक्ति को अभी आपके लिए तो ये 17 साल है क्योंकि महाप्रभु को हमारे में आए नवदीप नया तो उसका लाभ हमें किसी नहीं मिला। So his question is, he was born in Bengal and he is now 47 years old. So when he came to Islam, he was 17 years old. 30 Wow. years he had spent in Krishna consciousness. But then he never got an opportunity to become a devotee in Bengal. Only when he left Bengal and came to Mumbai, he came to Krishna consciousness. Now his question is, his 17 years he spent in Bengal, that was almost like a race because he never got a chance to do bhakti. So why is it so that Mahaprabhu came in Bengal, I also took birth in Bengal, but I never got a chance to practice bhakti there? No. There's a verse in the Bhagavad Gita. No, Bhagavatam. Tasyaya to prayate to Kovido. Now let me tell you, Brahmatam Mapadiyata. Tao let me tell you, Dukavada Yata. So come, Kalena Sabata Kambira Rahasha. What does that mean? श्रीमद् भागवत का ये जो श्लोक है इसका क्या अर्थ है? Those who are intelligent and philosophically inclined. जो बुद्धिमान है और दार्शनिक रुचि रखते हैं
So for you to say that you wasted your time, that's not true. Not true. You're wrong. तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 17 साल आपके बर्बाद हुए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत हो। Okay, let me ask this question to anyone. Has anyone here ever asked to get sick? As for Has anyone ever asked to get sick? हाँ, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसने कभी भी Raise your hand. ऐसा पूछा है, ऐसा भगवान से चाहा है, मन्नत मांगी है कि मैं बीमार हो जाऊँ, मेरा Nope. दुखाव रहता है ऐसा। Nobody's gonna raise their hand. No one get asked to get sick ऐसा कोई नहीं मांगता है। because it comes on its own accord. क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि अपने आप आ ही जाता है। How long it take took a body until it come? This body is a vehicle, ये जो शरीर है ये यंत्र के समान है। and because of this vehicle that you have, you've put in the work to create this vehicle. You have You put in the work. You put in the work. Just Yeah. listen to create this vehicle. तो आपने कुछ कर्म किया, उस कारण से आपको ये शरीर या ये यंत्र मिल गया। So everything that's connected to this body karmatically is coming, whether it's sickness or happiness. तो उसी कर्म के कारण इस शरीर से जो भी संबंधित है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, मिलता है। Prabhupada describes it as zeros, like thousands and thousands of zeros. Some people have maybe 1,000,000 zeros. Some may have 1,000 zeros. Somebody may have 200 zeros. Some might have, according to your karma, you have your zeros in your life. प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये अलग-अलग बातें, अलग-अलग चीज शून्य के समान है। किसी के पास 100 शून्य है, किसी के पास 1000, किसी के पास 1 करोड़, अलग-अलग मात्रा में शून्य है। So what you're destined to get is coming. तो जो आपका कर्म है वो आपके पास आएगा, वो शून्य के समान है। Trust me, I can attest to this lesson because I've learned it. आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मैं आपसे वही कह रहा हूँ जो मैंने सीखा है। It has nothing to do with skill. It has nothing to do with know-how or all those things. It's according to one's karma. If it's meant to be, it's going to happen. But if it's not, you can try all you want. तो आपके जीवन में जो आपको मिलता है ना वो आपकी कला पे निर्भर करता है, ना आप कितना जानते हो उस पे निर्भर करता है, ना आपकी योग्यता पे निर्भर करता है, सब आपके कर्म पर ही निर्भर करता है। It's not happening. Understand that. It's not going to happen. If it's not meant to be, you can put all the work into whatever you think that you're going to do or get. If it's not meant to happen, it's not going to happen. Trust me, that lesson I've really learned. तो अगर कोई चीज नहीं होने की है, आप कितना भी कर लो, वो नहीं होके रहेगा। So what's the most important? The one. You put the one in front of 1 0, it immediately becomes 10. तो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है? एक। अगर आप उस शून्य के सामने एक लगा देते हो, तो उसका एक मूल्य हो जाता है, वो 10 बन जाता है। But I'm not saying you don't do nothing. You act according to your propensity. Everybody's going to do that. Act according to their propensity. तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें किसी प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। But over endeavoring is not going to work. लेकिन अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। And that's what, especially youngsters, they really have to learn this lesson because everyone thinks that, if we work hard and do this, you're going to achieve something. If it's meant to be, yeah. But if it's not, it ain't happening. जो जवान लोग हैं उनको ये शिक्षा देनी चाहिए कि ऐसा नहीं है आप बहुत मेहनत करोगे तो जो आप चाहते हो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। So to answer your question, you was destined to go this route. That was your destiny. तो आपका ये जो प्रश्न है ना कि ऐसा क्यों, तो इसका उत्तर ये है कि आपका प्रारब्ध था, ये आपका कर्म था, आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए था, इसलिए ऐसा हुआ। Very fortunate.
Everyone in here is super fortunate to come to this level because what? Sister Ivy told Prayate to corridor. Intelligent and philosophically inclined. You wouldn't be here if that wasn't the case. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी बहुत भाग्यशाली हो जो यहाँ पर बैठे हो। अगर आप बुद्धिमान नहीं होते, दार्शनिक रूप से विचारशील नहीं होते, तो आप यहाँ पर कभी नहीं आते। That's why it's super important to read Prabhupada's books. इसलिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ें। You have to read because everything is there. आपको पढ़ना होगा क्योंकि And have faith in the process. And the Lord is in your heart. He's going to reciprocate. और इसलिए हमें श्रद्धा रखनी होगी और भगवान फिर हमारे साथ आना करेंगे। Any more questions? और कोई प्रश्न? Wow, just one question. केवल एक प्रश्न। Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Don't forget to pick your copy of this. And don't think because you don't speak English that you can't get it. Everybody knows this is 2025 and you know someone who reads and knows English. Get with them. Don't wait till it gets translated because this book information, Prabhupada is speaking to every one of you. If you're born here, then this information is about you. And not just those who are born here, anyone who's on this planet. Because in the bigger picture, planet Earth is considered Bharat Bhumi. And you have to see how fortunate you are. And most people don't know how fortunate they are. And that's the truth because I'm traveling all over this country and I've been doing it for the last 3 years. And they don't have a clue. तो मैं ये कहूँगा कि आप ये पुस्तक लीजिए, भूलिएगा मत। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस संसार में अभी 2025 का समय चल रहा है, तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जिसको अंग्रेजी आती है। आप ये पुस्तक उसको दे सकते हो। इससे प्रभुपाद जी ने जो पुस्तक में किया है, जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वो हम सबके लिए है। ये बात हर एक व्यक्ति को जो भारत में जन्म लिया है उसको जानना है कि अगर उसका जन्म यहाँ पर हुआ है तो बहुत भाग्यशाली है। पूरे विश्व में मैंने भ्रमण करके यही समझा है। Thank you.